Hello and very good morning to everyone. Welcome to the Mining Gyan. So today we are going to discuss about the lecture number 3 of the subject mining methods, and today's topic is boring and drilling. You will complete this topic in one lecture only. I will try my level best. Okay, and each and everything is in a short and precise manner. The important things related to it are only discussed here. Okay, so let's start और लेक्चर। तो आपका जो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बोरिंग और ड्रिलिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहली जो बात आती है कि आपका बोरिंग या फिर ड्रिलिंग करने का मेन मकसद क्या होता है। व्हाट इज द नीड फॉर ड्रिलिंग द ड्रिल होल्स। अब ड्रिल होल्स ड्रिल करने का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है भाई? दो ही मकसद होते हैं, या तो आपको क्या करना रहता है, या तो आपको एक्सप्लोरेशन करना होगा। Okay, there are only two needs, basic needs for the why drilling is done in the mines. Okay, first of all, for the exploration purpose, and the another is for blasting, for blasting, for the blasting purpose. Okay, but over here we have to basically focus on the exploration only. Okay, the drilling covered, the drilling topic covered over here is for the exploration purpose. That is, if we have to, why, what do we do in exploration? हम exploration में आखिर क्या करते हैं? अब अगर हमें यह पता करना है कि अंडर जमीन के नीचे आपका कोई भी मिनरल है या नहीं है, अगर है तो कितनी क्वांटिटी में है, ये सारी चीजें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ड्रिलिंग करना पड़ता है, जिसे हम एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। लेकिन लेकिन अब यह जो है एक्सप्लोरेशन का तरीका अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है, क्योंकि जब आप एक्सप्लोरेशन करते हैं तो उस समय जो ड्रिलिंग की जाती है वो अलग अलग ड्रिलिंग रॉड्स या ड्रिल बिट्स, या फिर बात करें कि कोर्स कैसे निकालेंगे, सैंपल्स कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि अंडरग्राउंड में क्या चीजें हैं, हमारा ड्रिल होल सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपस में कहीं से पानी आ रहा है तो उसे कैसे रोकेंगे, केसिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इन बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सप्लोरेशन and if we are doing drilling for the exploration purpose, then in that case we have to keep various things in our mind. That is, how we have to drill, which method we have to adopt while drilling. Along with that, if there is any problem while drilling, like uh, if there is large amount of seepage of water, and there is a deviation in the borehole drilling. Okay, since we have to drill long hole, we have to drill very long holes, like up to 300 meter, 1 kilometer. These are the boreholes which we used to drill in the exploration. Okay, so if there is deviation or not, such things we have to find out, and we have to follow these things and keep in mind while drilling our holes for the exploration purposes. वाटर मैनेजमेंट का मैं मान के चलिए कि मुझे 3-4 दिन लगेगा। मैं फ्री हो जाता हूँ एक काम से, फिर उसके बाद में आपका जो है तो वाटर मैनेजमेंट का क्लास ले लूँगा। मान के चलिए 10 तारीख तक या 11 तारीख तक मैं वाटर मैनेजमेंट का आपका खत्म कर दूंगा। ठीक है, और जो मेटल माइन के 2 मेथड बचे वो भी आपका 15 तारीख तक एनी हाउ खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर बचे, एक लेक्चर वाटर मैनेजमेंट का रहेगा और 2 लेक्चर आपके अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड्स के रहेंगे, तो वो आपके खत्म हो जाएंगे वहाँ पे। ये मुश्किल से 3 लेक्चर बचे हुए हैं, और एक और जो टॉपिक भेजा था उसका भी। तो 15 तारीख तक आपका जितने भी टॉपिक्स आपने भेजे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। Now, coming to the point. Now, why we are drilling the holes? We are drilling the holes to prove the existence of minerals. Okay, we have to find out what is if the mineral is present in the below the earth's surface or not. If it is present, then what is its quantity? So such things can be find out with the help of drilling holes.
to get, and for this purpose we used to get the cores of the rocks from which bearing pressure of the ground can be find out. Okay, we will also take out the core samples so that we can find out the pressure which is occurring at that point on the core sample due to the rock bearing strata. Okay, along with that we also get the information about the throw of the faults. Okay, थ्रो एंड हेड ऑफ द फॉल्ट्स। और इसी के साथ ही हमें क्या क्या, देखिए अब हमें यहाँ पे क्या क्या पता चलता है कि मिनरल का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। दूसरा हमें ये पता कर चलता है कि आपका जो कोर का सैंपल है जमीन के नीचे उस पॉइंट पे उसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है ये पता चल जाता है। इसके साथ ही हमें अगर कोई फॉल्ट है तो उसके थ्रो और हेड और बाकी के बेसिक डिटेल्स के बारे में भी पता चलता है। और भी किस काम के लिए हम होल्स ड्रिल करते हैं, हम ड्रिल करते हैं ओल्ड वर्किंग्स में से गैस या फिर पानी जो है तो निकालने के लिए, इसके लिए भी ड्रिलिंग किया जाता है। वी यूज्ड टू ड्रिल टू ड्रेन द गैस एंड वाटर फ्रॉम द ओल्ड वर्किंग्स, ठीक है। और किस लिए ड्रिलिंग करते हैं, एंड द अदर पर्पसेस फॉर विच वी यूज्ड टू ड्रिल आर द कि हमें इलेक्ट्रिक केबल्स, सिग्नल वायर्स, स्टोइंग पाइप्स, वाटर पाइप्स अंडरग्राउंड तक पहुंचाना है सरफेस से। वी हैव टू basically carry our electric cables, signal wires. If we have to carry our electric cables, signal wires, stowing pipes and water pipes to the underground from the surface, then in that case we have to drill the borehole. So there are various methods for which we have to drill the borehole: for the injection of the cement in the shaft sinking, for providing ventilation in underground mines, and other applications are also there. ना अब इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, है ना। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका एक ड्रिलिंग मशीन है। दिस ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड बेसिकली इन द ओपन कास्ट माइंस। ओके, इट इज द 360 DTH ड्रिलिंग रिग। दिस इज कॉल्ड द मास्ट नहीं दिख रहा, this is called the mast. Okay, this is a motor, these are the hose pipes, this complete is called the mast. Okay. This is called the drill rod, and somewhere over here there is a drill bit. All these things are present over here as we can see. Okay, now if we talk about the methods of drilling, there are various methods of drilling like the percussive drilling, rotary drilling. The percussive method is further subdivided as the drilling by rigid rods and the rope drilling, also known as the cable drilling or the churn drilling. Okay, द डिफरेंस, अब आपका यहाँ पे जो ड्रिलिंग मेथड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के ड्रिलिंग मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका परकसिव ड्रिलिंग हो गया, आपका रोटरी ड्रिलिंग हो गया, ठीक है। परकसिव ड्रिलिंग जो होता है उसमें क्या होता है, ठक ठक मारते रहता है, धर 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 लगा रहेगा वो, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं किसका, रोटरी ड्रिलिंग का, तो रोटरी ड्रिलिंग में क्या होता है कि आपका जो ड्रिल बिट होता है वो गोल गोल घूमता है, वो गोल गोल ऐसे घूमता रहेगा, जिसके कारण कटिंग लगातार होती चली जाती है, ठीक है। अगर मैं परकसिव ड्रिलिंग मेथड की बात करूं तो इसमें भी दो तरीके होते हैं। ओके, एक होता है आपका रिजिड रॉड्स का, मजबूत रॉड्स का इस्तेमाल करके भी ड्रिलिंग आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका रोप ड्रिलिंग, जिसे चर्न ड्रिलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें आपका जो रोटरी मेथड है आपका अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली रोटरी मेथड का आपका कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, rotary drilling. Okay, if we talk about the rotary drilling, it is a method which is used to get the core. Okay, rotary drilling क्यों करते हैं बच्चों, ताकि हमें क्या मिल जाए, कोर मिल जाए। सिंपल, रोटरी ड्रिलिंग का यही बेस्ट फायदा होता है कि हमें कोर आसानी से मिल जाता है।
परकसिव ड्रिलिंग में देयर आर ड्रिल चिप्स। ओके, परकसिव ड्रिलिंग में क्या होता है, ड्रिल चिप्स होते हैं, लेकिन रोटरी ड्रिलिंग में बाकायदा हमें एक वेल डिफाइंड मैनर में कोर मिलता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोर हमें एक वेल डिफाइंड मैनर में मिलता है। नाउ अब रोटरी ड्रिलिंग मेथड भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके लिए देयर आर आल्सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ द रोटरी ड्रिलिंग मेथड, दैट इज ड्रिलिंग बाय सॉ टूथ कटर, ड्रिलिंग बाय ट्राइकोन रोक रोलर बिट, ड्रिलिंग बाय डायमंड ड्रिलिंग बिट एंड द ड्रिलिंग बाय चिल्ड शॉट्स। ओके, तो ये अलग अलग ड्रिलिंग मेथड्स हैं जो कि रोटरी ड्रिलिंग में अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है, this is the table where you get a complete detail about the mode of energy of application. Okay, on that basis there are different variants of the or there are different methods of the drilling. Like if the mode of application of energy, on the mode of energy application, there is percussion drilling, top hammer, bottom hammer, the hole hammer, DTH, down the hole banner, or rotary percussion. Okay, these are rotary drilling is of different types like auger and rotary drilling, diamond drilling. All these are called the rotary drilling. Okay, if we talk about the size of the hole, on the basis of the size of the hole, then drilling methods are like small hole, large hole, and very large hole. A small hole varies from 150 mm to 200 mm dia. Okay, on the other hand, large hole varies from 250 to 350 mm dia. For it is basically for the coal. Small hole, large hole is for the overburden, and very large hole, that is more than 315 mm dia. Drill holes are drilled for dewatering wells. Okay, now if we talk about the method of mounting, which type of mounting is used, this is a very the best PDF you will get over here, the best table you will get over here, where drilling methods are divided on different basis, like mode of energy, size of hole, and the third one is method of mounting. Which type of mounting are you using for carrying your drill machine? Okay, अब आपका ये सबसे बेस्ट टेबल है। यहाँ पे आपको क्या फायदा मिलता है कि आप जो है तो यह देखते हैं कि इस टेबल में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अलग अलग चीजों के बेसिस पर हमने ड्रिल मशीन को डिफाइन किया हुआ है, अलग अलग ड्रिल मशीन के टाइप्स दिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका मोड ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन, कि आप जो है अपने ड्रिल मशीन को किस तरीके से एनर्जी को कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को अप्लाई कैसे किया जा रहा है। तो एनर्जी को अप्लाई कैसे किया जाता है, या तो परकशन होगा, धड़ 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 मारते रहता है, ठीक है, या तो आपका टॉप हैमर होगा, ऊपर से एक हथौड़ा जो है तो धीरे से छोड़ दिया, धट से मारा, तो उसके कारण भी आपका ड्रिलिंग होता रहता है। ठीक है, एक होता है बॉटम हैमर या फिर डाउन दी होल हैमर ड्रिल मशीन, ये भी होता है। उसके बाद आपका रोटरी के बेसिस पे कि घूम कर वो अपनी एनर्जी जो है तो यूज करके ड्रिलिंग का काम करता है। फिर आता है रोटरी परकशन, जिसमें कि वो गोल गोल घूम भी रहा है और लगातार ठक ठक मार भी रहा है, तो ठका ठक हो जाता है। ठीक है, बड़ा ही फेमस डायलॉग है ये, और ये मेरे द्वारा नहीं दिए गए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर वहीं पे मैं होल के साइज की बात करूं तो उस केस में स्मॉल होल, लार्ज होल एंड वेरी लार्ज होल ड्रिल के डाया वाले होल्स आप ड्रिल कर सकते हैं। जो कि स्मॉल होल जो होता है उसका, उस होल के डाया जो होता है 150 से 200 mm के आसपास होता है, कोयले में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद लार्ज होल्स जो है तो उसमें आपका 200 से लेके 250 से लेके 315 mm का डाया का होल्स होता है, जिसका इस्तेमाल ओवरबर्डन में किया जाता है। और 315 से अधिक mm वाले डाया का होल्स कहाँ पे होल्स का इस्तेमाल किया जाता है, डिवॉटरिंग के लिए। अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ माउंटिंग, कि आपका ड्रिल मशीन कैसे माउंटेड है, उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आपका या तो हैंड हेल्ड होगा सबसे पहला, या तो हाथ में लेके ड्रिलिंग कर रहे हैं ऐसे लेके, जो अपन जमीन में करते हैं नगर निगम वाले रोड वगैरह खुदाई। आज तो
आजकल तो रॉक ब्रेकर का यूज करने लगे हैं। बाकी पहले के जमाने में हैंड हेल्ड ड्रिल होते थे, ज्यादातर यूज होता था। उसके बाद स्किड माउंटेड आपका ड्रिल मशीन होता है, ठीक है, जिसको अपन ट्रैक्स के ऊपर ऐसे खिसका के ले जाते हैं, वो स्किड माउंटेड होता है। द ड्रिल मशीन is being pushed on the tracks, then that is skid mounted. On the other hand, wagon mounted, that is अगर आपका ड्रिल मशीन किसी वैगन के ऊपर रखा हुआ है, if your drill machine is kept on any type of wagon, then it is wagon mounted drill machine. And another is, last one is crawler mounted. As I have shown you in the last slide that a drill machine can be crawler mounted also, ठीक है, but drill machine is never a tire mounted. Okay, so remember all these mountings. Now, on the basis of power, how a drill machine or gets power, आपका ड्रिल मशीन को पावर सप्लाई कैसे मिलता है, ठीक है। अब आपका ड्रिल मशीन का जो पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई होता है, ये या तो इलेक्ट्रिक होगा ड्रिल मशीन, या तो आपका न्यूमेटिक होगा, या हाइड्रोलिक ड्रिल मशीन होगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार के ड्रिल मशीन आपके होते हैं, या तो इलेक्ट्रिक बेस्ड पावर होगा, या तो न्यूमेटिक बेस्ड, या तो हाइड्रोलिक बेस्ड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पावर, योर ड्रिल मशीन may be receiving power or energy from an electric source or pneumatic source or the hydraulic source. Now if we talk about the flushing, अब ड्रिल मशीन में फ्लशिंग होता है या नहीं होता है। फ्लशिंग इन द सेंस कि या तो वेट ड्रिलिंग होगा जिसमें कि पानी का इस्तेमाल करते हैं, या तो ड्राई ड्रिलिंग होगा जिसमें कि एयर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा तेजी से हाईली प्रेशराइज्ड एयर जो है तो जमीन के अंदर जाता है। और भी तरीके हैं ड्रिलिंग के, जैसे डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, इंक्लाइन ड्रिलिंग करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। और भी अदर टाइप्स के ड्रिलिंग मशीन आपके ड्रिल मशीन्स आपके होते हैं। एक होता है आपका मेजर वाइल ड्रिलिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं, वी यूज टू मेजर द ड्रिल होल्स continuously while we are drilling. On the other hand, we don't use to measure, sometimes we don't use to measure the drilling or the drill holes while drilling, okay. And sometimes drill machines are automated, fully automated, or sometimes drill machines are semi automated. So these are different kinds of drill machines on the basis of different things, okay. As you can see over here, this flow chart gives you complete detail about the drilling methods. That is, drilling methods is of two types. First of all, the conventional drilling method and the non-conventional drilling method. Non-conventional drilling method is like rotary drilling, okay, thermal, sorry, non-conventional method is like it is of two types, thermal drilling and the chemical drilling. Thermal drilling includes jet piercing, induction drilling, microwave drilling, and the laser drilling. If we talk about the conventional drilling methods, then it can be of four types: rotary, percussive, and water jetting. Now, if we talk about the rotary, then it can be full phase tunneling, large dia rotary drilling, diamond drilling, auger drilling, calyx drilling, and the rotary drilling. Okay. Now, if we talk about the percussion, then cable tool drilling, churn drilling, top hammer drilling, down the hole hammer drilling. Okay. Top hammer drilling can be of three types: uncases drilling, OD drilling, and the ODEX drilling. It is a type of top hammer drilling. So you have to remember this flow chart. This will give you complete details of the types of drilling or the methods of drilling which are used in our mining. Basically, if we talk about the percussive drilling, okay, if we talk about the percussive drilling, this type of drilling, percussive. अगर मैं percussive drilling की बात करूं,
परकसिव ड्रिलिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो परकसिव ड्रिलिंग में क्या होता है, व्हाट इज इन द परकसिव ड्रिलिंग? number of shots striked at an interval. आपके when a particular number of shots are being struck at striked by the drill bit at a particular interval of time, then that type of drilling method is called the percussive drilling. Basically here we use different types of tools also for in the case of percussive drilling, and the rod which is used in the case of percussive drilling, if we talk about the rod used in percussive drilling is called, that rod is basically made up of nickel chromium metal. Okay, it is made up of nickel chromium metal, or basically it is made up of carbon steel. Okay, it is made up of carbon steel. The length of the rod is, if we talk about the length of the rod, then it is 3 meter, and its cross section is 38 mm into 38 mm. Okay, this type of rod are used in percussive drilling. If we talk about the chisel, which is used in percussive drilling, then there are various types of chisels which are used in the percussive drilling. If we talk about the types of chisel for the hard strata, अगर मैं हार्ड स्ट्राटा के लिए चिजल्स की बात करूं कि कौन कौन से टाइप के चिजल्स आपके यहाँ पे आते हैं, तो सबसे जो हार्ड स्ट्राटा के लिए यूज हो सकता है वो है वी चिजल। दूसरा आपका आता है टी चिजल, ठीक है, ये इसके लिए वी चिजल। अगर आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड स्ट्राटा में यूज करना है, फॉर वेरी हार्ड स्ट्राटा, तो उस केस में आपका टी चिजल का इस्तेमाल होता है, टी चिजल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वहीं पर आपके पास क्या होता है, डेरिक होता है, इसको अपन या तो मास्ट बोल देते हैं या तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, डेरिक कहा जाता है। डेरिक का मेन काम क्या होता है, ये जो आप डेरिक देख पा रहे हैं, इसका मेन काम होता है, the main purpose of the derrick is to, the main job of the derrick is to basically lift the rods from the holes. This is a drill rod, as you can see over here, this is a drill rod, okay, and for lifting this drill rod from the holes, derrick is basically used, and there are two motors placed over here. One is for moving the drill rods from up and down, and one is for moving the drill rod in a rotation, okay, or to give a rotary motion to the drill rods, okay. So there are two different motors are placed over here, and derrick is used to basically lift the drill rods from the holes, okay. Now the next thing is the retaining key. retaining key retaining key. So what do you mean by retaining key? Basically, it is a device used at the time of raising and lowering the rods of square cross section. Just remember this thing. What is retaining key in the percussive drilling? It is a type of device. It is a device that is used for raising or lowering of the rods of square cross section. That is called the retaining key. Another instrument which is used in the percussive drilling is the bulldog safety clamp.
If we talk about the retaining key, then this is your retaining key. The retaining key. If you have seen a drill machine in your home, at your home, maybe you have seen a drill machine, the drill bit is put into that retaining key and locked over there. Put into the drill bit is kept in that retaining key and locked over there after that drilling is done. So that portion where the drill bit is attached, that portion is called the retaining key, which used to just bind the very carefully bind the drill bits. Okay, so similarly retaining key is over here to just raise or lower the drill rods. Okay, the another thing which is used, so here you can see different types of drilling methods, like this is the air leg drilling. Okay, air leg is used for drilling purpose. Now each drill rod has two screws, two screws, screw. One is the female screw, that is this one, female screw. Female screw. And the another one is male screw. Male screw. For attaching two drill rods to each other, there is a screw system provided in at each end of the drill rod. At one end there is a female screw, and at the other end there is a male screw present over there to attach two different drill rods. Okay, as you can see over here, this is the female screw system arrangement, and that is the male screw arrangement present over here. Okay, the next thing or the next topic which comes over here, as you can see, there are different types of rods. This is a chisel, T chisel. Okay, drilling chisels which are used in auger, and the augers which are used in the percussive drilling are the, this is a worm auger. Okay, as you can see, this is a worm auger. This is a worm auger drill machine, drilling bit. Okay, the next is the auger. Okay, no, sorry, this one is, sorry, this one is worm auger. It is used for soft strata. Okay, and this one is clay auger, which is used for very soft strata. Just this one is the straight chisel, V chisel, and the T chisel. So there are different types of, as you can see here, there is a uh, straight chisel, V chisel, and the T chisel. T chisel is not over here. नेक्स्ट इज मैनुअल ड्रिलिंग. इफ वी टॉक अबाउट द मैनुअल ड्रिलिंग, अगर मैं मैनुअल ड्रिलिंग की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पाइप्स की मदद से पानी को सप्लाई करते हैं हाई प्रेशर की मदद से. ठीक है, और जो भी क्रैक्स, ठीक है, जो भी क्रैंक ऑपरेटेड आपका एक बीम होता है, ठीक है, जिसके लिए आपका ड्रिल रॉड वगैरह जो है, तो ड्रिल रॉड्स वगैरह आपका पूरा यहाँ पे कनेक्टेड रहता है. ठीक है, क्रैंक आपका यहाँ पर फिट रहते हैं, ये क्रैंक्स लगे हुए हैं, पुलिस वगैरह, इसकी मदद से आप भट्ट से जैसे ही गिराते हैं तो ये धीरे 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 ड्रिलिंग करते हुए नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है. ठीक है, ठीक है, ये तो जो आपके मेथड्स ऑफ ड्रिलिंग है हम उनको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे. यू विल नॉट सी ऑल द मेथड्स ऑफ ड्रिलिंग इन अ वेरी डिटेल मैनर.
we will just have the overview from where we could make our concepts clear, and the topics from where most of the questions arises. Okay, so it is about the sludger. The next is the topic is according to that is sludger. Sludger, what do you mean by sludger? Sludger basically आपके ड्रिलिंग करते समय जो होल्स के बॉटम में आपके कटिंग्स रह जाते हैं, उनको निकालने के लिए जो भी डिवाइस यूज होता है उसको क्या कहते हैं? स्लजर होते हैं. बेसिकली स्लजर इज अ डिवाइस टू रिमूव द कटिंग्स फ्रॉम द होल्स, from inside the holes which are produced during drilling. Okay, and this is done for cleaning the holes, is done by cleaning of holes is done by sludger. Basically it consists of a long cylinder or a pipe, and it is open at the top and with a flap valve at its lower end. Okay, the flap valve open outwards. Okay, the flap valve open outwards, and after that upwards, sorry, as you can see over here, this is a sludger. Okay, it is open over here, and this is a flap valve. This one is a flap valve. This flap valve opens upwards, that is in this direction. Okay, as soon as we used to drop it down the hole, it just goes at the bottom of the hole, and all the materials, then in that case, as soon as it strikes the bottom of the hole, then all the cuttings which are present at the bottom of the hole, which used to enter this sludger, and this flap valve will remain open. During this period, all the drill cuttings will enter into the sludger. As soon as you will raise it from the bottom of the hole, then in that case, all the drill chips will remain inside the sludger, because this flap valve will close automatically. Okay, and will not allow any type of drill chips to get out of the sludger. So in this manner you can use the sludger. So if you are using the sludger, then in that case it is said that the bottom of the hole is always kept full with water during drilling. Okay, the cuttings brought to the surface in the sludger give an indication of the rock being drilled. Okay, they also give about the information of the rock that is being drilled. Now fishing the borehole, sometimes what happens कि आपका कभी कभार क्या होता है कि जो बोरहोल्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर उन बोरहोल्स में चीजल के पीसेस कुछ कुछ गिर जाते हैं. ठीक है, तो उनको निकालने के लिए, या फिर डायमंड ड्रिलिंग कर रहे हैं तो डायमंड गिर गया हमारा, भाई इतना महंगा डायमंड है ना, गिरा दिए हो, मैडम को देते तो अलग से खुश होती है ना. तो मैडम गर्लफ्रेंड किसी को भी दोगे तो है ही, ठीक है, आजकल तो डायमंड भी सस्ता आने लगा है, केमिकल्स वगैरह के आने लगे हैं, तो दे दिया करो यार. ठीक है, चलो कोई नहीं, नहीं दियो तो कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी ले लो फिर ढेर सारा देना. नाउ फिशिंग द बोरहोल, तो आपका डायमंड अगर गिर गया तो मुझे तो वो डायमंड निकालना पड़ेगा ना, इतना कीमती डायमंड मैं ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा. ठीक है, तो वो डायमंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं टू टेक आउट द anything which has been dropped, which has been dropped into the borehole by mistake. So to take out those things out of the boreholes, we use different type of devices like the cross foot or the spiral worm can be used to catch the broken rod under a joint in the borehole. But है ना, अगर आपको क्या करना है कि आपको अगर कोई रॉड बोरहोल में गिर गया तो उसके लिए तो आप क्रॉस फुट और स्पाइरल वर्म का इस्तेमाल कर लोगे. Okay, in that case we can use the spiral worm or the cross foot. But
if some small pieces are dropped inside the hole, then what we can use? So in that case, a powerful these things are raised with the powerful magnets. Okay, so such method for the withdrawal of the something which has been dropped into the borehole is called fishing the borehole. Okay, if something gets into the borehole by mistake. Now, lining a drill hole. We used to line a drill hole. What is the purpose of lining a drill hole? है ना, आखिर हम ड्रिल होल्स को लाइनिंग क्यों करते हैं? देखिए क्या होता है कि जब भी होल्स ड्रिल किए जाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वो धंसना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार अगर आपका सॉफ्ट स्ट्राटा, इफ यू हैव अ सॉफ्ट स्ट्राटा, then in that case the borehole which you have drilled may collapse. So to avoid such things and to avoid the water to from being seeping into the boreholes, we use the casing system, okay, in which we used to line the drill hole. Okay, the entire length of the drill hole is being lined. Okay, चलिए अब डायमंड ड्रिलिंग की हम बात करते हैं। डायमंड ड्रिलिंग, अब डायमंड ड्रिलिंग में आपका सबसे कॉमन मेथड ये कहां पर अडॉप्ट किया जाता है? अगर आपको रॉक्स के कोर चाहिए तो उस केस में डायमंड ड्रिलिंग किया जाता है। इफ यू वांट टू टेक आउट द कोर्स ऑफ द रॉक्स, देन इन दैट केस डायमंड ड्रिलिंग इज बेसिकली डन। ड्रिल बिट आपका जो है तो क्या होता है इसमें आपका, इसमें ड्रिल बिट कंसिस्ट ऑफ अ कास्ट स्टील शेल। ड्रिल बिट में आपका एक कास्ट स्टील शेल होता है, ठीक है, उसके लोअर फेस में, और उसमें दो ढेर सारे छोटे छोटे सॉकेट्स होते हैं जहां पर ब्लैक डायमंड के जो पीसेस होते हैं वो वहां पर सेट किए जाते हैं। ठीक है, ड्रिल बिट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल कास्ट स्टील शेल हो गया, दूसरा आपके छोटे छोटे सॉकेट्स है जिसमें कि ब्लैक डायमंड लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये ब्लैक डायमंड ऐसे डायमंड्स होते हैं जिनका ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन ड्रिल बिट्स में इनके हार्डनेस के कारण इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हार्डेस्ट रॉक के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब जो होल साइज होता है डायमंड ड्रिलिंग का, उसको जो है तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे एनएक्स सीरीज, बीएक्स, एएक्स और ईएक्स सीरीज। ओके, अब जो ड्रिल रॉड्स होते हैं और ड्रिल बिट्स होते हैं तो वो बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, एक तो एक्स सीरीज, दूसरा डब्ल्यू सीरीज। ठीक है, अब ये आपका किसके द्वारा स्टैंडर्ड्स जो है तो दिया गया है? डायमंड कोर ड्रिल एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, उसने ये आपके साइजेस जो है तो डिसाइड किए हैं कि आपके ड्रिल बिट और ड्रिल रॉड का क्या साइज होगा। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो एक्स सीरीज है उसका दिया हुआ है कि ड्रिल रॉड का बाहर का डाया कितना होगा, एक्स सीरीज में कितना होगा और आपका डब्ल्यू सीरीज में कितना दिया होगा। ठीक है, अब यहां पर ये चीज इंचेस में है। ठीक है, ये चीज इंचेस में है, इंचेस का मतलब समझते हैं। अब आपका, और इसी चीज को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एमएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका साइज इतना छोटा है, एक्स सीरीज का साइज इतना छोटा है कि उसको हम इंच में शो करते हैं। ठीक है, वहीं पर जो डब्ल्यू सीरीज है उसका साइज ऐसा है कि हम उसको एमएम में भी शो कर सकते हैं। तो ये इंच में स्टैंडर्ड्स हैं, इसको आप एमएम में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये एमएम में आपके स्टैंडर्ड दिए हुए हैं डब्ल्यू सीरीज के कि क्या क्या डाया होगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका होल डाया, कि अगर मान लीजिए 67 एमएम के डाया वाला मैं होल मारता हूँ, ड्रिल रॉड यूज करता हूँ, तो उस केस में 75 एमएम मेरा होल का डाया होगा, और जो कोर का डाया होगा वो होगा 54 एमएम। ओके, now we will talk about the surface arrangements for the डायमंड ड्रिलिंग। अगर आपको डायमंड ड्रिलिंग करना है तो आपके लिए क्या क्या सरफेस अरेंजमेंट होने चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए एक डेरिक, एक इंजन जो कि पावर सप्लाई करे, विंच होता है, पंप होता है पानी सप्लाई करने के लिए ताकि फ्लशिंग किया जा सके,
सेटिंग टैंक होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर ड्रिल रॉड्स को जो है तो रखा जाता है, ठीक है, ताकि कोर को लिफ्ट किया जा सके और रिमूव किया जा सके और ड्रिल बिट को चेंज किया जा सके। कोर बॉक्सेस होते हैं ताकि कोर्स को ले जाके उसमें रखा जा सके। एक ड्राइविंग और फीड मैकेनिज्म होता है ड्रिल रॉड्स का, ठीक है। उसके बाद डायमंड ड्रिल बिट आपका जो है तो हाई स्पीड के साथ रोटेट किया जाता है लगभग 300 आरपीएम पे, और जो प्रेशर होता है डायमंड्स पर वो कितना होता है 1.5 से 2 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बिट्स पर डाला जाता है, ठीक है। अब आपका यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो वेट अ मिनट, आई विल कम इन जस्ट 2 minutes। ओके, सो अब मैं बात करता हूं सरफेस अरेंजमेंट्स की, ठीक है। If we talk about the surface arrangements for the diamond drilling, then we must we must have a derrick, so which will be used for the raising and the lowering of the drill rods. Okay. On the other hand, we must have an engine for the power, for supplying the power, a winch which will help the derrick to raise or lower the drill rods and the drill bits. Okay. After that, there must be a pump which will supply water under high pressure for the flushing of the drill chips or for cleaning the holes. There will be a setting tank, okay, and along with that there will be a platform which will be used for keeping the drill rods, so that we could take out the cores, or we could remove the cores, or we could lift the drill rods. The lifted drill rods will be kept over there, and then after that the cores will be removed from it. After removing the cores, we need a core box so that we could keep our cores into that boxes. Okay. Sorry. So the pressure which is acting on the diamonds of the drill bit and the rate of the advance of the drill bit uh, into the rocks are controlled by basically by an arrangement known as the feed mechanism. With the feed mechanism, with the help of the feed mechanism only, we could control the pressure which will be provided on the drill bits and the rate with which our drill rods or the drill bits will advance. Okay. If the holes are deep, then in that case hydraulic feed mechanism is used, and if there are shallow holes, then in that case screw feed mechanism is used. Okay, so you have to remember these things. Now if we talk about the core recovery, अगर हम core recovery की बात करें तो उस केस में आपका बोलता है तो कि कोर को जो भी रॉक को हम ड्रिल करते हैं उसमें से कोर कलेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसे बोलते हैं कोर बैरल, ठीक है। अ डिवाइस नोन एज कोर बैरल इज यूज्ड टू कलेक्ट द कोर्स फ्रॉम द रॉक ड्रिल्ड। ओके, अब इसकी जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ द कोर बैरल इज 0.5 to 3 मीटर। ओके, द कोर बैरल इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द सिंगल ट्यूब कोर बैरल एंड द डबल ट्यूब कोर बैरल। अब जो सिंगल ट्यूब कोर बैरल होता है वो होमोजीनियस फॉर्मेशंस के लिए होता है। इफ योर रॉक स्ट्रक्चर हैज अ होमोजीनियस formation, that is the formation of the rock is similar from along the depth or along the strike, then in that case that type of formation is called the homogeneous formation. The chemical composition is same. So in such cases single tube core barrels are used. Basically homogeneous formations are such that they does not get eroded by flushing water, and the solid core can be taken out without risk of blockage in the barrel. Okay, but double tube core barrel is used at such places where there is a danger of this thing, that due to water flushing the core barrel cores may get destroyed, okay, or they may get eroded due to flushing water. So in that case double tube core barrels are used. Basically double single tube core barrel is also known as calyx.
नाउ बोरहोल डेविएशन, अगर मैं बात करूं किसकी, बोरहोल डेविएशन की, इफ यू टॉक अबाउट बोरहोल डेविएशन में क्या होता है कि आपका जो बोरहोल होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है, कभी कभी डेविएट हो जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली इंक्लाइंड अगर आपका है तो, ठीक है। तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं कि बोरहोल हमारा अपने रास्ते से डेविएट हो गया है। अब ये जो डेविएशन है ये अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री हर 30 मीटर की लेंथ पर होता है, ठीक है। अब डेविएशन जो है कुछ एंगल्स पे होता है, ज्यादातर नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही एंगल्स पे होता है, लेकिन ये समय के साथ बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे ये छोटा सा एंगल आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बोरहोल डेविएशन का मेजरमेंट करते हैं, एंड दैट मेजरमेंट जो बोरहोल डेविएशन का हम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, बोरहोल सर्वे कहा जाता है, ठीक है। Basically, sometimes what happens, the borehole gets deviated from its original path either vertically or horizontally. So, in that case, either vertically inclined or horizontally inclined, and this deviation may be very less. That is, which will be a small angle only. That is approximately for every 30 meter there is a deviation of 2 degree only. But this is a very minute thing for a very short range hole. But if the long holes are drilled up to a depth of 300 meter, 400 meter, 1 kilometer, then in that case, this deviation is could be very dangerous. Okay. Okay. So in that case, this may give you a wrong data or the wrong information about the surface below where you want to do the exploration. So we used to measure the borehole deviation, and that measurement of the borehole deviation is called the borehole survey. The second thing is that the borehole deflection, जो दूसरी चीज है वो है borehole deflection. Borehole deflection जो है तो आपका क्या होता है कि ये ड्रिलर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ताकि डेविएशन को कंट्रोल किया जा सके। ओके, ये जानबूझ के किया जाता है। बोरहोल डेविएशन इज अनइंटेंशनल, इट इज नॉट डन बाय इंटेंशन, ठीक है। बट बोरहोल डिफ्लेक्शन इज एन इंटेंशनल मेथड in which we used to reduce or the driller tried to reduce the borehole deviation. Okay, so borehole deflection is a type of intentional deflection. Now the factors which used to affect the borehole deviation are the depth of the hole, angle, and the nature of the strata drilled. Okay. Borehole deviation basically depends on the four things, that is the hole dia. If the dia of the hole is large, then in that case the deviation of the hole will be less. And if there is a small dia hole, then in that case deviation will be more. The another thing on which borehole deviation depends, bed pressure. High bed pressure increases the deviation. Core barrel, stiffness of barrel avoids deviation, and the casing, it will help you to avoid deflection or the deviation. If you want to control the borehole deviation, then you have to remember something, that there must be the hole dia must be suitable. Along with that, there must be a suitable bed pressure, core barrel, and casing shall be used. Use of full dia drill rods for the entire length. Use proper couplings with good threads, and by deflection method. By deflection method also you can control the borehole deviation. Okay, since everyone knows that high bit pressure increases deviation, and sharp bit with less bit pressure, then there will be, if you use a sharp bit with less bit pressure, then there will be a less deviation. Okay, you have to remember this thing also. So as I have said that
as I have said that core barrel, about the core barrel. Okay, the stiffness of the core barrel will avoid deviation. So how the stiffness, what type of core barrel must be used? You have to use a heavy walled core barrel. Heavy walled core barrel. There will be a less deviation. Okay. दूसरा कोर बैरल और कैसे मदद करेगा? लेस गैप, by maintaining a less gap between barrel and hole side. Now we will talk about the borehole survey. So basically borehole survey is done for the measurement of the deviation. Borehole survey, the main objectives of the borehole survey is the to find out the direction of the boreholes, to find out points from where the deviation occurred, and about the to collect the 3D information. Okay, for this purposes borehole survey is done. So if we talk about the methods of the borehole survey, then there are four methods. Each EC method, in which hydrofluoric acid and is used, which measures the angle only and by corroding the glass. Okay, the next is the Carlson compass, Tropri instrument, and the borehole camera can also be used for the borehole survey. Now, if we talk about the hydrofluoric acid or the HF acid, basically HF solution, hydrofluoric acid solution, is kept in a glass test tube. Okay, because HF solution is so strong that it will corrode the glass and make it thin. Okay, its surface will be made thin by due to the reaction of the hydrofluoric acid with the glass. Okay, and there will be created a plane of separation. So this hydrofluoric acid is used for the borehole survey. We will take a test tube. We will fill it with some X solution, sorry, hydrofluoric acid solution. After that, we will tie it with a string and put it into the borehole. As it will go down, and if there will not be any type of deviation, then your test tube will not strike it will not strike the walls of the borehole. But if there is a deviation, then in that case it will strike the borehole and it will bend a little, and that bending gives you the angle, that is gives you the angle. Suppose that this test tube is filled with hydrofluoric acid. Okay, now if it will strike the borehole, then in that case it will bend in some direction, and due to that there will be a such kind of corrosion will be created in the test tube, inside the test tube, which will give you the angle of the deviation. Okay, now we have to study about the different things which are with different terms which are used in the test tube. As you can see over here, this is a test tube. Now this test tube is filled with hydrofluoric acid. Okay, this point this point is called the plane of separation. Plane of separation. Okay, this is called plane of separation. Where you will see a line, and that line is called the EC line.
Ek line. Okay, that line is called the ek line. This plane of separation will look like this. Okay, this is the plane of separation. Plane, a particular plane of separation, and this is the line created by it around it is called the ek line. Okay, and if there will be a division, then such line will also be created, which will be a higher point. There will be a higher point, and the angle which is created between the higher point and the lower limit. This is your lower limit, lower limit angle which is created over here is called the ek angle. Ek angle. Now, if we talk about the directional drilling, directional drilling basically it is done to control the direction of the borehole, to follow a predetermined pipe path, and to complete the borehole at a desired point. Suppose that you are at the surface, okay, and there is an ore body or lying below the earth surface, and you have to find the details about that ore body. So we used to drill a borehole like this. Okay, in this manner we could find out the extent of the borehole, okay, or extent of the ore body. That's why directional drilling and borehole deflection is done, so that we could find out the complete details about the ore body. Okay, if we talk about the range of the directional drilling, then it is limited to a circle, while drill machine is at the center and dia of circle is equal to the depth of the parent borehole. The methods which are used for the deflection of the boreholes are the casing deflection, use of wedges, sonic orienting assembly, and the arc cutting. All these methods are used for the deflect. All these methods are the methods of the borehole deflection. So you have to remember all these things. Just remember the names only, and don't go in detail. I will provide the short notes. From there you can complete your topic. Okay, so that's all for today. Till then, all the best and thank you so much. Good night, everyone. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.